Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, we are discussing our chapter breathing and exchange of gases. Now in this video we are going to discuss the transportation of gases. So let's देखते हैं हमारे इस टॉपिक को transport of gases. In the human body there are the two gases which need to be transport. दो gases है जिनका transport होना है. First है oxygen. First one is oxygen and second है carbon dioxide. So first of all we will discuss the transport of oxygen. पहले oxygen का transportation देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि how the carbon dioxide gas is transported. So let's start with the oxygen transportation. This oxygen is transported in the human body by two ways. दो तरीके से oxygen जो है transport होती है human body के अंदर. First, it can be transported by the binding with hemoglobin protein. So जो first method है वो है with hemoglobin. Hemoglobin, you know that it's a pigment which is present in our RBCs, and this pigment can bind this oxygen and transport it. Almost 97% जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के अंदर वो इसी तरीके से हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग की फॉर्म में हो रहा है. This hemoglobin, one molecule of hemoglobin can bind with the four oxygen molecules. 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सकता है. और जब एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है देन इट्स मेक अ कॉम्प्लेक्स which is a reversible or temporary complex. तो हीमोग्लोबिन की जब ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होगी, रिएक्शन होगी, then it's make a complex which is known as oxyhemoglobin. It's a oxyhemoglobin. इसका हम नाम लिख देते हैं कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है when the hemoglobin binds with the oxygen. And as I already told you, one hemoglobin can bind with the 4, क्योंकि इसमें 4 different sites होती हैं जहां पे ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है. तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है एंड इट्स मेक अ टेम्परेरी और द रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विच इज नॉन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन. इसे हम रिवर्सिबल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट कैन बी इजिली डिसोसिएट. ये आसानी से डिसोसिएट हो सकता है. ये डिसोसिएट होके आफ्टर डिसोसिएशन इट विल रिलीज द हीमोग्लोबिन एंड इट विल रिलीज द ऑक्सीजन ऑल्सो. अब ये डिसोसिएशन की बात क्यों आई, क्यों यहाँ पे टेम्परेरी या रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बना है? इसका रीजन यही है, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना. अगर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो जब ये ऑक्सीजन टिश्यूज की साइड पे पहुंचेगी तो ये इसे रिलीज कैसे करेगा, है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो दिस इज द रीजन व्हाई दे आर मेकिंग अ टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स सो दैट दिस ऑक्सीजन कैन बी रिलीज आउट व्हेन इट रीचेस टू द टिश्यूज. जब टिश्यूज पे पहुंचेगी तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हीमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाएगी, टिश्यूज में जाएगी और वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज होगी. Hemoglobin is free. Now this hemoglobin can be used again. ये फिर से यूज किया जा सकता है. So this is the transportation of oxygen through the hemoglobin and it's happened almost 97%. 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ही ट्रैवल करती है. This binding of oxygen with hemoglobin, it depends on some factor. We will discuss these factor later on when we will already discuss the carbon dioxide का भी जब हम ट्रांसपोर्टेशन देख लेंगे. उसके बाद हम वो फैक्टर्स भी देखेंगे कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग. सो वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पे ये हमने देखा 97% जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन का वो हीमोग्लोबिन के साथ हो गया. नाउ रेस्ट 3% जो है 3% ट्रांसपोर्टेशन oxygen transportation is done by in the dissolved form of plasma. This is done in as a dissolved form in plasma. This is the amount of the oxygen in which the oxygen can directly dissolve into the plasma. प्लाज्मा में आएगी और वहां पे डिसॉल्व हो जाती है और उसी फॉर्म में पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा. बट इट्स वेरी लेस, इट्स ओनली 3%. ऑलमोस्ट 97% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड होके ट्रांसपोर्ट की जा रही है. Here we need to know that the 100 ml of oxygenated जो हमारा ब्लड होता है, oxygenated blood
it travel 5 ml oxygen. This is 100 ml oxygenated blood transports 5 ml oxygen. This is the amount the 100 ml oxygenated blood is transporting the oxygen in the body. So this is the transportation of oxygen by two ways, hemoglobin and in the dissolved form of plasma. Now let's discuss the transportation of carbon dioxide, as it is very important topic. Let's see the transportation of carbon dioxide in the body. The transportation of carbon dioxide is done by the 3 ways. 3 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है. सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट मेथड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. सो लेट्स सी, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का इज ऑलमोस्ट 70%. 70% कार्बन डाइऑक्साइड इन बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी. Now let's see how this transportation done. The carbon dioxide which is released after the metabolic activity. ऑक्सीजन जब ट्रांसपोर्ट हो गई है, टिश्यूज में पहुंच गई है, वहां पे ऑक्सीजन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज होंगी एंड देन एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद जब ब्लड में एंटर करती है, व्हेन इट एंटर्स इनटू द आरबीसीज, जब आरबीसी में एंटर करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, this carbon dioxide react with the water. Carbon dioxide water के साथ reaction करेगी and as a reaction it will form the carbonic acid, that is H2CO3, and the enzyme which is required for this reaction is the carbonic anhydrase enzyme. This carbonic anhydrase enzyme जो है ये RBCs में ही प्रेजेंट रहता है, तो उसी एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की. So let's write the name of enzyme also, that is carbonic anhydrase. So this enzyme is very useful for this reaction. जैसे ही ये एंजाइम प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस में H2CO3 मींस कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा. दिस कार्बोनिक एसिड विल लेटर ऑन डिसोसिएट. ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है एंड इट विल फॉर्म द हाइड्रोजन आयन एंड bicarbonate ion, that is HCO3. It will form the hydrogen ion and bicarbonate ions. यहाँ पे इस कार्बोनिक एसोसिएशन, कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन होने के बाद ये जो आयंस बन रहे हैं बाइकार्बोनेट आयंस, दे विल कम्स आउट फ्रॉम द आरबीसी. ये आरबीसी से बाहर आ जाएंगे. आरबीसी से बाहर आ जाएंगे मीन दे विल कम इनटू द प्लाज्मा. दिस इज द प्लाज्मा. ये प्लाज्मा है. ये प्लाज्मा के अंदर आने शुरू हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे. जब प्लाज्मा में इस तरीके से नेगेटिव आयंस अंदर आ रहे हैं, तो प्लाज्मा के अंदर यहाँ पे एक आयनिक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म हो रहे हैं एंड दे आर कमिंग into the plasma. So due to this ionic disturbance or ionic differences, now the chloride ions from the plasma, they will start moving towards the erythrocytes or to the RBCs. तो प्लाज्मा में यहाँ पे आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आ रहे हैं, प्लाज्मा से क्लोराइड आयंस जो होंगे वो आरबीसी में जाना शुरू कर देंगे, सो दैट दिस आयनिक डिस्टर्बेंस कैन बी मेंटेन, इसे मेंटेन किया जा सके, नॉर्मलाइज किया जा सके. This movement of the chloride ions into the RBCs through the plasma is known as chloride shift. इसे हम बोलते हैं chloride shift. Or this process is discovered by the scientist Hamburger, so it is also known as Hamburger effect. So यह another name है Hamburger effect. This is the another name for this process, Hamburger effect. So this chloride shift is the process by which the ionic disturbance can be maintained or resolved, and this is the way. यहाँ पे आ गए बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में प्लाज्मा में है, और इसी फॉर्म में अभी प्लाज्मा के साथ पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएंगे. So this is the first way by which the carbon dioxide can be transported. 70% जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो इसी फॉर्म में हो रहा है, in the form of bicarbonate ion. Now let's see the second method of the transportation of carbon dioxide. Second way of the transportation is with the hemoglobin. Like oxygen, carbon dioxide can also bind with the hemoglobin, so it can be transported by the hemoglobin. Almost 20 to 25% transportation जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का,
वो हीमोग्लोबिन के साथ होता है। एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो बाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड इट्स फॉर्म अ टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये भी एक टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स फॉर्म अ टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स व्हिच इज नोन एज कार्बामिनो hemoglobin. Carbamino hemoglobin. So this is the temporary complex which formed after the binding of hemoglobin with carbon dioxide, and later on this temporary complex will also break down. ये फिर से ये break down हो जाएगा क्योंकि टिश्यू लेवल पे बना है। जब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अंदर जा रही है, बाइंड हो रही है, और एल्वुलर साइट पे पहुंचने के बाद ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाइज के अंदर एंटर करेंगे और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा। सो इट विल डिसोसिएट इनटू hemoglobin and oxygen at the site of alveoli. So this is the way where we can say that the carbon dioxide is also transported with the help of hemoglobin, and जो 20-25% जो transportation हो रहा है वो इसी तरह से हो रहा है। Here the binding of this hemoglobin with the carbon dioxide or the binding of the oxygen with hemoglobin, it depends on some factor. हमने पहले भी कहा था कि हम ये फैक्टर बाद में डिस्कस करेंगे। So let's see what are these factor on which this binding of hemoglobin depends. hemoglobin कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होगा या ऑक्सीजन से बाइंड होगा, ये डिपेंड करता है उनके पार्शियल प्रेशर पर। अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई है, then hemoglobin will bind with the carbon dioxide, and if the partial pressure of oxygen is high, then hemoglobin will bind with the oxygen and it will make the oxyhemoglobin. So this is the one factor. Other than these factors, the pH or hydrogen ion concentration, temperature, these things also affects the binding of hemoglobin. So hemoglobin की binding किसके साथ होनी है, ये कुछ factors पे depend करती है। वो factors है that is PO2, PCO2, hydrogen ion concentration, pH and temperature. These are the factors which affects the binding of hemoglobin with oxygen or carbon dioxide. So इसके बारे में देखते हैं। अगर PO2 ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, PCO2 ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगा। And next we will see that this temperature, hydrogen ion concentration, pH or temperature. This hydrogen ion concentration and pH or temperature, if they are low, अगर ये low है, then the hemoglobin will bind with the oxygen. That happens at the site of alveoli to blood gases exchange. alveoli से जब blood के अंदर ऑक्सीजन आती है, उस टाइम पे हाइड्रोजन आयन concentration low होती है, pH low होगी and temperature भी low होगा. At that time the hemoglobin binds with the oxygen, but these things get reversed at the tissue level. टिश्यू लेवल्स पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज आल्सो इंक्रीज एंड टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीज्ड ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. So at that time the hemoglobin dissociate with oxygen and it get bind with carbon dioxide. So these are the factors which affect the binding of hemoglobin with oxygen or carbon dioxide. So this is the second way of the transportation of carbon dioxide. Now let's see the third method of transportation of carbon dioxide is by the plasma. The carbon dioxide can be transported in the dissolved form in plasma. So it's dissolved form. It can be transported in the dissolved form by plasma. Now let's see how this transportation occurs. कैसे ये transportation हो रहा है इसको समझते हैं. The carbon dioxide, when it enters into the plasma, it reacts with the water because plasma has high amount of water. Plasma में water present है. उस water के साथ carbon dioxide reaction करेगी and it will make the carbonic acid, that is H2CO3. So carbonic acid will form there. This carbonic acid is transported as it is in the complete body. इसी फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी. Now we can say that this transportation of the carbon dioxide in the dissolved form in plasma is happen only in the 7% amount. ये सिर्फ 7% होता है. सिर्फ 7% जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो इस डिसॉल्व फॉर्म में हो रहा है. जबकि हमने देखा कि यहाँ पे जो बाइंडिंग हो रही है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है इस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इट्स 70%.
व्हाट इज द रीजन ऑफ बोथ दीज डिफरेंसेस? यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए जहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग हो रही है, इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, and this enzyme is present in the RBCs. It's not present in plasma. So this reaction is very slow in the plasma. प्लाज्मा में रिएक्शन बहुत स्लो होती है, सो बहुत कम अमाउंट में ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का प्लाज्मा के अंदर वो 7% ही होगा. So these are the three different ways by which we can say that carbon dioxide is transported in the human body. First, it can be transported in the form of bicarbonate ion. It can be transported by binding with the hemoglobin, and it can be transported in the dissolved form in plasma in the form of carbonic acid. So these are the transportation of respiratory gases. In the next video, we will discuss the oxygen dissociation curve in details.